but I used to sculpt chalks with sharpener blades. So I used to अच्छा. make Johnny Bravo and Powerpuff Girls and all तब these, से ही and artist. I तब से Oh. so like small. So I had that good touch of like artistry. I think so. मैं मम्मी को दिखाता था, देखो आज जॉनी ब्रावो बनाया लड़का है, तो आर्टिस्ट बन मम्मी गया है. मम्मी यूज्ड टू हिट मी कि तू अबे क्या करता है ये स्कूल करने जाके जाता है. पागल तो हाँ तो ये करने जाता, तेरे को तो पढ़ने भेजते हैं. Hello to all the good people over the internet. Today we have with us Mr. Bhigru Arora from the Tondo. Once again, thank you so very much for joining, Bhigru. Means a lot. Thank you, means a lot. Thanks a lot. For the first question, how did the Tondo started? So I mean this business was not a plan. It happened accidentally. So when I Oh. was in my, so I'll shorten it up. So when I was in my final year of the college, so I mean, so I did diploma first, like 3 years, then another B.Tech, like that was also 3 years. So diploma was like really fun. I learned a lot. Like it was really kind of a situation where I was feeling that yes, I'm growing in life. But degree was like it was not happening. So it was like कि ठीक है इधर भी करके देखते हैं. So like I scored good in diploma, so I was thinking कि चलो डिग्री में भी करते हैं और देखते हैं कैसा चलता है. बट I mean, it was not even पढ़ने के बाद भी it was not working out. I was getting backlogs. खूब मम्मी पापा से डांट पड़ रही थी कि तू पढ़ क्यों नहीं रहा है, क्या हो गया ये वो, लाइक एवरी अदर पेरेंट डज जब बच्चा फेल होता है. वही तो typical Indian household family. एग्जैक्टली कि तू पढ़ ले तो फिर तेरी लाइफ तो ऐसी ऐसे है, बस तू पढ़ ले, ये 3 साल पढ़ ले. हाँ. तो उसके बाद सो उसके बाद शादी कर आई ले. रिमेम्बर शादी शादी का तो इट वाज नॉट लाइक इतना प्रेशर नहीं था. लाइक दे आर लाइक स्टिल कि हाँ तुझे शादी करनी है तो कर. बट God's grace, I found a really nice partner and I'm getting married on 9th February. I'm coming down. Most welcome. तो बस यही है. So when I was in my second year of the degree, basically in my 6th or 5th semester, so I saw one of the videos on Facebook. There was this guy called Rohit Lalwani from Bhopal. Mm-hmm. So he was playing a C minor blues. So that inspired me a lot कि यार मुझे तो musician ही बनना है लाइफ में. I don't want to do this because I was doing music like from like my 10th standard. So it was not, I mean, not, it was kind of a hobby. It was not a passion at that time. तो उसके बाद वही उसका वीडियो देखा and then I realized like it clicked me, it shined me like somehow कि अच्छा ऐसे musician भी हैं इंडिया में. So that was the time when it opened up the like whole dimension for me कि हाँ कि this is what you have to do in life. So I was playing bass at that time actually. It I saw was some of your if bass I'm photos. yeah. So I started off by guitars and then I shifted to bass in 2016. So at that time फिर I was looking for bass players इधर उधर कि कोई अच्छा teacher. And then I came across this um, video on YouTube. So this band called Afterglow, Afterglow. जिसमें some like top cream quality musician from New Delhi were there. So Rie Ona on saxophone, and then Rie was from Japan, but not she's not here now. So and the bass player was Sonic Shori. He's my teacher now. So he's a elder brother to me. I admire him a lot.
तो मुझे था कि ये वीडियो, एंड आई सॉ हिज प्लेइंग, लाइक कि इसी से सीखूंगा मैं, किसी और से नहीं सीखूंगा. सो फाइनल ईयर में व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, सो आई मैंने प्रिपेयर तो कर लिया था कि ठीक है, इट्स नॉट हैपनिंग, आई एम गोइंग टू लर्न म्यूजिक. So सो like what were you इन pursuing? Electrical engineering. Yeah, I was pursuing electrical and electronics engineering at the moment. So See, I because it was guessed like things right. nice. तो बस यही है कि डिप्लोमा में आई हैड फन, आई हैड लाइक गुड होल्ड ऑफ माय सब्जेक्ट्स एंड ऑल दैट. तो फिर उसके बाद फाइनल ईयर कॉलेज, आई वाज लाइक कि यार आई एम गोइंग टू डू म्यूजिक, पढ़ाई चलती रहेगी साथ में. सो आई टुक Mhm. अ नॉन अटेंडिंग, आई रिक्वेस्टेड माय पेरेंट्स कि यार कॉलेज इज नॉट हैपनिंग, कुछ How did पढ़ाते that नहीं है. request? How did that request period go? So I mean, they knew my potential somehow, because since childhood, they knew कि मेरा interest क्या है. So I was not at all good with studies, not at all. So my mom used to beat a lot कि तू पढ़ता नहीं है. तो वहां से, so when I was in school, I was not good with, again I would always said like not in good in studies. So I used to sit at the back bench, not a indisciplined kid, but I used to sculpt chalks with sharpener blades. So I used to Acha, make okay. Johnny Bravo and Powerpuff Girls and all तब these, से ही and artist. I तब से. Oh. So like small. So I had that good touch of like artistry, I think so. मैं मम्मी को दिखाता था, देखो आज जॉनी ब्रावो बनाया लड़का जाए, तो आर्टिस्ट बन मम्मी गया used है. मम्मी यूज्ड टू हिट मी कि तू अबे क्या करता है ये स्कूल करने जाके, जाता पागल तो. हाँ, तो ये करने जाता, तेरे को तो पढ़ने भेजते हैं. है. तो बस वहीं से, सो फाइनल ईयर कॉलेज में, सो एंड लाइक जैसे स्कूल टाइम में चौक से बनाता, देन अगेन माय पेरेंट्स यूज्ड टू बाय मी टॉयज, एंड माय हैबिट वाज टू मेक समथिंग एल्स आउट ऑफ इट. तोड़ दिया, कुछ और बना दिया मोटर उसका. निकाल दिया गाड़ी से. एग्जैक्टली, बैटरीज चला रहे. तो बड़ा ये सब साइंटिस्ट. कॉन्सेप्ट मेरे बचपन में ही क्लियर हो गए थोड़े बहुत, लाइक खेल के. सो फ्रॉम देयर देन आई रिक्वेस्टेड माय पेरेंट्स, तो उनको लगा कि हाँ ठीक है यार, मतलब लेट्स ट्रस्ट हिम वंस. हाँ, पापा इतने थोड़े कन्विंस्ड नहीं थे म्यूजिक को लेके, बट नाउ ही इज लाइक इट्स फुल सपोर्टिव. तो उसके बाद आई व्हेन आई टुक लाइक दिस नॉन अटेंडिंग, आई then I started traveling from my hometown to New Delhi to take bass lessons. So it's So, like so you like two dropped four. out of college or just completed it? No, I was doing college, but it was like kind of a correspondence then. वो पार्ट I टाइम हो गया था. part time हो गया, मतलब कॉलेज जाता नहीं था, but I used to give exams and everything and assignments, तो उसका भी तो vivas, सेटिंग करना everything. पड़ रहा था कॉलेज वालों के साथ कि यार Exactly, अटेंडेंस का पंगा देख लो. exactly. तो कॉलेज में वैसे भी पढ़ाई नहीं होता, उनको भी वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ वही मतलब था. हाँ. So my hometown from New Delhi is like 240 kilometers one side. So I used to travel like 4 times a month from Yamunanagar to New Oh my Delhi, god. Yamunanagar. So for bass lessons, and Sonic was kind enough to keep me, like let me stay at his place कि हाँ भाई बंदा दूर से आता है, तो हाँ 250 किलोमीटर I used से to दूर से आता है. take bass lessons. So he had a lot of respect for me. So Amount of dedication is beyond. exactly. Mhm. So that vibe also matched. So Mhm. I used to hang with him a lot. He used to take me to his jams and gigs. So it was a fun time to me. I spent a lot of time at Piano Man. Piano man, yes So sir. yeah. So Mhm. from there, then like during this period only, when I was learning music, I used to just make cables. Like how it started was like when I had electric guitar. So you Oh, know, so your electric engineering knowledge is coming to work over here. yeah, exactly. ये सही बात कर दिया. तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ, लाइक व्हेन आई हैड माय लाइक दोस बेस एंड एवरीथिंग. So Yamunanagar is not a big town, so there's only one music shop, and that guy runs a monopoly, and Okay, he'll हाँ. have like a decent amount of stuff, but like not super high quality. And I am the guy who like wants everything to be super high Yes, हाँ quality हाँ and like clean and like हाँ. OCD Top oriented, notch. top notch. तो
वही मतलब केबल्स मिलता था वो हर गिटार के साथ मोल्डेड वाला. So that cable used to die like every second, third week, and like it was like all very pissing. Like 350 रुपए 400 रुपए का केबल आता था वो, because that guy used to sell for that much only. I guess अब के टाइम में 50-60 रुपए में भी मिलता है वो वाला केबल. तो when I used to ask my mother कि यार केबल खराब हो गया प्लीज पैसे दे दो, she used to like हर महीने का तेरा ये हो गया है कि पैसा दे तो केबल खरीदना है, स्ट्रिंग खरीदना है. बिकॉज शी वॉज द वन हु वॉज एनकरेजिंग कि हाँ तेरे को म्यूजिक करवाना है. बिकॉज शी इन हर चाइल्डहुड ऑल्सो वांटेड टू बी अ म्यूजिशियन एट सम पॉइंट, बट उनका फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसा नहीं था कि वो कर पाए. बट सो शी वांटेड कि मेरा बच्चा कर ले. So from that, so like big help, and the tone door is not just me; it's my family also, and many other people and musicians. So from there, I had my pocket money. Like I remember, I had 700 rupees in my pocket. I went to a electronic shop, bought some spare parts, learned how to make cables from YouTube, and started making cables. तो एक बनाया, like it worked fine. It worked for like almost a year or something. Wow. That duration I made many other cables for my friends and my teachers. और So तो ऐसे they ऐसे started to करके. reach you out after seeing that Yes, you so make cables. exactly. So there's a friend of mine from Mumbai. His name is Vivian D'Souza. Vivian D'Souza. So yes, so bass player. So he helped me, like he bought one of my cables, and then he said, "Ki you post your cables in that AMU's musical Facebook group." So I posted my first post there, and I got my first order from Northeast. So that guy bought, then Mumbai people bought. So slowly, I started making, so like started saving some money, like not very high margin, like just because it was not a plan. So I was कि हाँ ठीक है इतना पैसा निकल जाए, because रेंट तो देना नहीं था, घर पे रह रहा था. तो खाने पीने का खर्चा, पॉकेट मनी निकल जाए, दोस्त लोगों के साथ ऐश करने को पेट्रोल का पैसा निकल जाए बस. तो इतना काफी है. तो from there, when I was taking classes from Sonic, so again the music was not really happening, because I used to practice, but it was not going at the level where I was thinking, because obviously I was busy making these cables, and then I went into market research, and then pedal boards भी बनाना शुरू कर दिया, gig bags भी बनाना शुरू कर दिया, slowly. तो then Sonic suggested कि यार you need to jam with musician, तो दिल्ली आ जाओ. So 2018 February I moved to New Delhi. Then लोगों के साथ जैम करना शुरू कर दिया, एंड ये सब हो गया. Then joined a music school here. तो वहां से धीरे धीरे then I realized कि me being a bass player, people want me as a गिटार टेक. एक मैकेनिक का ज्यादा जरूरत है लोगों को मार्केट में. तो slowly people started knowing me as a good guitar tech rather than a good bass player. Okay. ब्रांडिंग हो चुका था आपका. हाँ मतलब वो नाम चल चुका था तब तक कि हाँ ऐसे भृगु बंदा है, कोई बाहर से आके रह रहा है, एंड ही इज डूइंग गुड जॉब. तो ठीक है, like God's grace and everyone's help, so it took off. Again, it was not a plan. तो simultaneously वो भी चल रहा था. Then I was doing music as well. वो उस टाइम तक gigs मिलना शुरू हो गया. So पैसा ही पैसा. पैसा ठीक था, decent. I was getting good money. तो because the only thing was कि I was delivering quality. That's it. I had a very clean intention for the industry कि हाँ musicians की help करनी है बस, पैसा देख लेंगे. So from there, and I was fortunate enough to work with some of the most, I mean, you can say कि most top-notch affluent techs musician. and upfront musician and luthiers as well.
हाँ. जिन्होंने नॉलेज दिया, जिन्होंने सिखाया थोड़ा बहुत कि चीजें ऐसे काम करती हैं. सो आई वाज लाइक आई एम स्टिल थैंकफुल टू देम कि दे हेल्प मी अलॉट और ये सब. So from there and now it's slowly growing and now I'm here where Now there are 1,500 guitars at the back, and we are no sitting no here not watching an exhibition. हाँ 1500 गिटार तो उससे ज्यादा तो कर दिया होगा अब तक इस ड्यूरेशन में, बट अभी Okay, nice session. Bye bye. 1500. Oh my God. So what was your age? And like this was like all this was happening. What was your age in that point of time? when I actually started, so it started in 2017. That was my final year of the college. So 2017 से ही it actually started. So basically 2016 में I was also doing it like the whole year, making cables and everything. But 17 में I officially named it the Tone Tour. So it started in 2017 when I was in my like second, basically third year of the college. Fourth year I named it, and 2018 I passed out. Then I moved to New Delhi, सर्च फॉर वर्क और ये सब. तो यहीं पे फिर दिल्ली में अब तो इट समटाइम इट लाइक इट ऑलमोस्ट टेक्स लाइक 8 to 10 months फॉर मी टू लाइक गो एंड मेक अ ट्रिप टू माय होम टाउन. 10 महीना हो जाता है, घर ही नहीं जा पाता. बिकॉज यहाँ पे एक दिन छोड़ देता हूँ, एवरीवन इज लाइक कि भैया मेरा गिटार दे दो प्लीज. कहाँ है? दे दो यार. कोशिश तो पूरा रहता है कि जल्दी से जल्दी दे. But I mean it's a technical job, so I mean there are parameters and some boundaries जहाँ पे you cannot speed up. So every detail has to be taken care of. Exactly. So that yeah, kind that's of it. brings me to the like second question. How did you get this name, Tone Door? It's an interesting name. I to be very honest, I don't know. I mean everything in my life sometimes happens intuitional and sometimes happens very randomly, but it works out. I remember still thinking of the name. I was sitting in my room and with my laptop in my searching business names. No, not searching business. So I was paint खुला हुआ था मेरी screen पे, and I was actually thinking the name at the same moment and was trying to design a logo as well. Oh, multitasking. So the logo, if you see the previous logo, the beginning logo was not designed on any of the Illustrator, AI or Adobe. It was made on Paint. वो भी Windows 7 का. अच्छा, बहुत हाई फाई. सुपर हाई टेक. तो उस पे बनाया था. तो ऐसा ही रैंडम, इट वाज लाइक वेरी रैंडम. सो टोन डोर आई स्टिल डोंट नो कि कैसे आ गया, बट इट समहाउ क्लिक्ड मी. तो ठीक है लाइक कि हाँ ठीक है चलते हैं करते हैं इसको. यू आर लाइक राइटिंग डाउन नेम्स, वो उसमें कॉलम में लिख रहे थे आप? टोन, नहीं म्यूजिक, गिटार, टेक? No, not at all. It was just like random. I was searching for Tone words. ऐसे ही हो गया random. I wish all these beautiful accidents happen to everyone. I wish to. बहुत सही है. When did you learn luthiery professionally or just by interacting with luthiers and musicians and working by yourself, self-taught? No, actually, I didn't actually. So from like as I said, like since childhood, my brain used to work that way. Even though if it's today, if I see something working, so I have seen like during the childhood time, I used to watch Discovery a lot. And my most favorite episode or whatever like program you say was how it's made. So how it shows made, what's the processes of making. So I was so much bombarded with such kind of videos. Like after I got the internet with me, I was spending most of my time looking for stuff how everything is made. If I was having a guitar, तो मैं ये नहीं देख रहा था कि गिटार बजाते कैसे हैं. I was looking at कि गिटार बनता Electronics. कैसे है. हाँ, पिकअप्स कैसे बनता है, स्ट्रिंग्स कैसे बनता है. स्ट्रिंग स्प्रिंग की तरह दिखता था, तो मुझे ऐसा होता था कि ये तो स्प्रिंग होता है, ये
जब आप ट्यून करते हो ये तो खिंचता क्यों नहीं है? तो आई वॉज लुकिंग एट कि स्ट्रिंग्स कैसे बनता है। Every सो possible वो, question. हाँ, तो वो बचपन से ही दिमाग ना वैसा काम करता था। सो माय माइंड स्टार्टेड वर्किंग लाइक दैट, कि हर Hmm. चीज को प्रोसेस ही वैसे करना है। इफ अगर मेरे पास एक गिटार था, आई रिमेम्बर लाइक फर्स्ट सीरियस रिपेयर आई, बिकॉज आई वाज सो पोजेसिव अबाउट माय म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड एवरीथिंग, तो मैं किसी को हाथ तो नहीं लगाने देता था, मेरे को Same किसी पे here, भरोसा ही man. नहीं होता था। Yes. Please don't touch. मतलब Like कैसा होता हाँ, है? मैं मतलब घर पे कोई फैमिली आ जाता तो उनके साथ बच्चा हो जाता था ना, कोई आता था, तो मैं उनको बोलता पकड़ू. था कि भाई, मैं दरवाजा बंद करके प्लीज डोंट लेट हिम इनसाइड, मेरा गिटार पड़ा है। मेरे को एंजाइटी रहता था कि जब तक वो हाँ घर से हाँ नहीं जाता है कि हाँ. खराब हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ. हाँ, मतलब कोई तो लगता वो है कोई प्रैक्टिस फॉरेन कर, इन्वेशन हो गया है. हाँ एग्जैक्टली, कि कोई आ गया बस उठा के ले हाँ जाएगा अभी। हाँ, अभी तो खत्म है गिटार. हाँ। हाँ. So from there, I remember I like started repairing my guitars only, दोस्तों के. And I remember I used to tune harmoniums also on 440, because Oh, once you got these tuner apps, no, in the ट्यूनर phone. एप्स, हाँ हाँ हाँ. Yeah, so I learned the concept like how frequent, like how to make a reed vibrate faster or a slower. तो वो समझ आ गया मेरे को, तो ये भी हो रहा था, like I was doing everything to earn some pocket money, and it एंड यू turned आर out डूइंग इट great. अलोन. हाँ, अकेले ही कोई, बस थोड़ा सा स्ट्रगल ये होता था कि हाँ, टूल्स कहाँ से मिलेगा। जैसे हम्म. वो हारमोनियम के रीड को ट्यून करने के लिए रेगुलर फाइल नहीं चलता था, आई हैड टू गो टू सम स्पेशल शॉप एंड बाय ज्वेलरी फाइल्स। ओह. तो फ्रॉम देयर देन फ्रेंड आते थे, सो आई रिमेम्बर वन ऑफ द सीरियस रिपेयर्स आई डिड, एक किसी का गिटार का ब्रिज उखड़ रहा था। सो नाउ वी हैव दोज प्रोफेशनल ब्रिज ग्लूइंग क्लैम्प्स, तो उस टाइम नहीं हम्म. होता था। वो वाला, हाँ. मतलब इट्स अ स्टूमैक सी टाइप, हाँ तो हाँ, it इट्स just fixes down on वंडरफुल, the bridge, हाँ हाँ. एग्जैक्टली, इट्स अ हम्म. वेरी वंडरफुल प्रोडक्ट। तो हम्म. उस टाइम नहीं समझ आया, तो आई टुक अ फ्रेंड का हेल्प लिया, उसको फोटो दिखाया कि यार ऐसा क्लैम्प बनवाना है, तो उसका मेटल वर्किंग वर्कशॉप था, तो उसने बना के दिया। तो वहां से रिपेयर किया, तो देन आई पोस्टेड सम फोटोज ऑन फेसबुक, देन पीपल सॉ कि हाँ, ये अच्छा काम कर रहा है। पीपल स्टार्टेड कनेक्टिंग टू मी कि भाई मेरा गिटार ये वो। तो आई लाइक वन बाय वन, तो फिर वो वर्ड ऑफ माउथ होता रहा। हाँ. फ्री मार्केटिंग. फ्री मार्केटिंग, एग्जैक्टली। तो उसके बाद मार्केट रिसर्च किया कि आई वाज लुकिंग फॉर लाइक प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आई एट दैट टाइम आई वाज लुकिंग एट कि हाँ, पीपल वर रशिंग फॉर पेडल ट्रेन, पेडल बोर्ड्स। तो पेडल बोर्ड्स नहीं था, तो देन आई वेंट इनटू लाइक मेकिंग पेडल बोर्ड्स, आई हायर्ड अ प्रोडक्ट मार्केट कारपेंटर। फिट. वो डाला, एंड आई रिमेम्बर कि उसमें मैंने 3 मॉडल निकाला था। तीन भी नहीं, दो निकाला था, एंड आई गॉट लाइक फाइव फाइव पीसेस मेड, एंड विद इन 1.5 मंथ, थोड़ा सा टाइम लगा, पर वो 1.5 महीने में वो पीसेस निकल गया। सो देन आई गॉट सेकंड बैच मेड लाइक 20 पीसेस, ऐसे स्लोली 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 स्लोली। So lot of orders started coming in. हाँ हाँ, बिकॉज आई यूज टू पोस्ट अ लॉट, आई यूज टू, So वो इतना सब काम ऑनलाइन से नहीं। आ रहा था. हाँ, सब कुछ, बिकॉज आई वॉज आई वॉज द होल बिजनेस एट द टाइम, आई वॉज द मैनेजमेंट, I was the courier guy. I was the helper guy who used to Sole pack all the entrepreneur. used to pack all the couriers and everything, get them delivered to the courier shop. उनका AWB नंबर निकलवा के कस्टमर को फॉरवर्ड करना है, वो सब मेरा काम Track था, the पहुंचा। process, invoice and all of हाँ, that. हाँ. तो वो सब खुद ही कर रहा था सब कुछ। हम्म. I was so busy at that time, I remember. When did it like start to take like you are doing all of that right now alone or you have a team right now? No, now I have team, so I have two Hmm. more people with me. Hmm. So one, his name is Deepak, and second one, his name is Ram. Hmm. So both of them are like I basically like picked them specifically कि मैं इनको train करूंगा, Okay. because they don't have any other skill to do. Hmm. Hmm. So I picked them that कि मैं अपने हिसाब से इनको train करूंगा, doesn't matter if it takes some time. So now they are like Pro. helping hand to me, not a pro.
प्रो लेवल तो नहीं है, इट विल टेक सम टाइम फॉर या श्योर। हाँ हाँ तो तो प्रो बना देंगे, कोई टेंशन नहीं है, प्लान तो यही है। सिर्फ 6 महीने चाहिए अभी तो उनको 1.5 2 तो साल हो गया मेरे पास, 1.5 साल तो हो गया काम करते हुए। So they're like enough experienced. हाँ, Hmm. अभी तो है, मतलब लाइक आई जस्ट, सो हमारा टर्म्स में बात होता है एंड देन दे अंडरस्टैंड कि हाँ सर ने ये बोला है तो ये करना है, तो लाइक दैट, सर सो वी आर देखना सर नहीं नहीं तो आई मीन so right आई, now 3 people are toned out. yeah, three, but like we were four actually, so we had a girl in the admin section, but she's working somewhere else now, तो अभी एडमिन भी मैं ही हूँ। So back to the roots. Back, हाँ, back to home Back to from where I home. started. Now still, as I told, like अभी couriers बनाने हैं, Oh, label चिपकाने हैं, invoice लेवल डालना है, चिपकाना, package करना है. Wow. exactly. So right now, how many, like, what amount of orders did you get back when you, like, it was kind of taking off, and what amount of Mhm. orders do you get now? At that time, I was getting, I guess, 10 to 12 orders a month, which was okay. Now, I mean, the number is still not big, mm, because like we have a number of products also. Like one of our newly product is a guitar care kit where it has 3 bottles. One is polish, a string cleaner, and fretboard oil. It's totally made in India. It's Oh, my you guys made formulation. that. Yeah, I made it. Wow. And my guys helped me to like like mix the whole batch and then package it and label the bottles and pack the bottles and everything. So Wow. like now we have number of sections, number of products in the FMCG line where people can FMCG. like pick. Yeah, like cables हैं, cables में भी काफी सारा category है, like almost 10 to 15 category of cables. Then guitar accessories में we have, guitars में तो we have every possible part with it, even a single small screw. Wow. अगर किसी का गिटार का स्क्रू भी खराब हो जाता है, पिक गार्ड का स्क्रू भी रस्ट हो जाता है, if they want pick guard screws we have. I mean those are the kind of part which is not easy to procure in India. Yeah. आपको स्क्रू मिल जाएगा बट इट्स नॉट एग्जैक्टली what a person looks for, कि वो डोम शेप नहीं मिलता, तो वैसा crafted. हाँ. हाँ वो रिसर्च किया, took some time, फिर मंगाया, अच्छा अप्रूव किया, फिर बल्क में मंगाया, तो ऐसा, सो वी हैव अ फुल इन्वेंट्री, तो number of orders now, right now we have is like we at least get 2 orders a day, Wow. which is like 60 parcels. So, Month. which is not, yeah, 60 parcel for 50, 60 parcels a month, which is, I mean, as a e-commerce business, it's not a lot, because where my setup is right now, we have like this whole building is a commercial building. So Okay. we have businesses who send like 200 parcels a day. Oh. तो अभी क्या है, लाइक वी हैव द वेबसाइट आल्सो, लाइक इट्स इन कंस्ट्रक्शन, उसके साथ भी बहुत कुछ हो गया बीच में, Oh. हुआ फिर रुक गया, Okay. because like because right now like the management is little broken Yeah, मैं समझ at पा the रहा tone हूँ. door, मैं yeah, आपके and we दर्द are समझ पा trying रहा हूँ. as a small scale business, so we are trying to like just cop up and trying to like match the pace we want to. फंड्स का कमी तो हमेशा रहता ही रहता है तो हाँ हाँ. हाँ, वो उस वजह से. This is an interesting story. My God. Like you popped a question there. Like, how many products and services, or what products and services does the Toonder offer right now? Basically, and in the service wise, like we do fine setups for like electric guitars, acoustic guitars, classical guitars, and many other strings instruments also, and then we do amp repairs, audio equipment repairs,
and then we make like hand-wound pickups, like custom designed hand-wound pickups. Like you tell me like what kind of frequencies, sound you want, and we'll design it for you. I mean, it's like Wow. not any other pickup like off the shelf. कोई सीमो डंकन या फिर डिमार्जियो नहीं है कि आपको एक कैटलॉग में से ही चूज करना पड़ेगा. So if you want something specific, like Custom your made. personality, yeah, your personality in a pickup, done. Tone door. So tone door. Then in the product line, obviously, we have pickups, we have our pedal power supplies, like the daisy chain one, like you see the one spot. So we have our own. It's called Daisy Inc. So, and then we have cables. Cables, maybe have obviously quarter jack guitar cables, then pedals patch cable. Patch cable, maybe we have three, four types of different patch cables, solderless and micro connectors and pancake connectors, regular wala, wo sab. Then we have XLRs, monitor cables, RCAs. I mean, name it. Wireless, ये होता है wireless, e-commerce. wireless transmission cables. A musician, like basically the aim was to like help a musician, that's it. So I am trying to procure each and every thing to like in the business, so we can provide it like very affordable rates to musician and with the quality. ताकि क्योंकि जब से मैं म्यूजिक सीन में आया हूँ, मैं व्हाट व्हाट आई हैव सीन कि एक म्यूजिशियन को जब सप्लाई नहीं मिलता ना किसी चीज का, then the person rushes out to some outer country. यूएस से ला दो, यूरोप से ला दो, और अगर मिल भी जाता है then one has to wait for like maybe एग्जैक्टली 2-3 महीना 4 महीना, तब तक तो बंदे का एंथुजियाज्म खत्म हो जाता है कि यार एक पेडल छोड़ो आना यार. था मेरा. 1.5 साल हो गया तो अब तक नहीं, नहीं आया. एग्जैक्टली कि कभी कोई फ्रेंड आएगा, कोई हाँ, रिलेटिव तब आएगा लेके तो ले आएगा. हाँ. आएगा. So yeah, this then we have pedal boards. We used to make gig bags. तो gig bags तो after COVID we had no demand, so वो shut down कर दिया हमने. Because of COVID की वजह से तो 2.5 साल 3 साल कोई traveling नहीं हुआ. So it was very hard to maintain a like non-working section of like Yeah. bags. तो वो shut down कर दिया हमने. सेल लगा Because के वो सारा स्टॉक निकाल दिया. because वो मैन्युफैक्चर Sorry. करने में भी कॉस्ट लगेगा, सेल्स तो है नहीं, तो जस्ट Exactly. वो काइंड ऑफ एग्जॉस्टिंग मनी. Exactly, because like storing all the raw materials for the bag was also taking a lot of inventory cost and everything, because it was taking space a lot. तो उसको भी हमने सारा सोल्ड आउट कर दिया. Wow. For the last set of 2 questions, then I'll set you free. Otherwise, आप मारोगे मुझे. नहीं नहीं, I mean take your time. मैं भी गप्पे मारने, हम गप्पे मारते हैं और मजा आ गया आपसे बात करके, ये तो बोलना मेरे को. You have worked for a long amount of time. What is the most common question you get from musicians and artists? So the most common question what I get from all the musician is like कि हर musician इस market में, हर musician के साथ इतना धोखा हुआ है इस market में, like I won't take any names, or like everyone comes to me and say कि यार उसने मेरे गिटार के साथ this shop did this. क्योंकि हर कोई like I was very possessive about my instrument. Everyone is, because it's hard earned money and then it's a dream in your hand. हर कोई सोचता है कि मेरे पास एक आइबनेस का वो वाला गिटार हो, और हर कोई जोड़ के 1,80,000 या फिर 90,000 का कोई अच्छा गिटार खरीदता है, 50,000, डजेंट मैटर, प्राइस डजेंट मैटर. तो बंदा सोचता है कि यार मैं अच्छी तरह इसको रखूं, अच्छी तरह मेंटेन करूं, पर क्या होता है मोस्टली स्टोर्स पे ना ध्यान नहीं रखा जाता, बिकॉज नन ऑफ देम, व्हाट आई थिंक, आर म्यूजिशियंस. देयर आर वेरी फ्यू म्यूजिशियंस in the country, music stores in the country, who actually understands the pain of a musician. So I wanted to start a venture where कि हम एक्चुअली म्यूजिशियन का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, रादर देन जस्ट रिपिंग ऑफ पॉकेट्स एंड उसके जस्ट हैविंग अ एम कि मेरे को तो अपना डेली का अपना धंधे का कोटा पूरा करना है बस. बिल्कुल. सो दैट्स द ओनली क्वेश्चन लाइक वी गेट कि यार आप कर दोगे ना, हो जाएगा ना, मतलब ये तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो लाइक द मोस्ट लाइक ट्रस्ट इश्यू होता है. सो एवरीवन
क्लैरिफाइज कि हाँ हो जाएगा या नहीं होगा, कि हैव यू एवर वर्कड ऑन इट बिफोर, ऐसा। क्योंकि वही है ना कि हर किसी का एक्सपीरियंस वैसा है। तो जैसे बोलते हैं ना, छाछ का क्या, दूध का जला छाछ को भी फूक के पीता है। हाँ 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 तो हाँ। हर किसी का है। तो उसका क्या है कि उसमें ना हम भी सिमिलर इंडस्ट्री में है, तो हमारा भी थोड़ा रेपुटेशन उस वजह से डाउन होता है। तो वी हैव टू, व्हेन a customer or a musician like this enters our shop, so we have to basically educate them, और उनको ट्रस्ट में लाना पड़ता है कि बहुत सही रिलैक्स, चीज है इट्स ये, हाँ। ओके। हाँ, तो Because also they have यही to सब। like have the knowledge of, understand the instrument and then एग्जैक्टली speak to the one who will work on that. एग्जैक्टली। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लोगों को एजुकेट करने में रहता है, बिकॉज पीपल टेल देयर एक्सपीरियंस कि यार मुझे मैं शॉप पे सेटअप कराने के लिए गया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर आप ना पिकअप भी क्लीन करा लो, ये आपका पिकअप सही रखेगा, 1500 रुपये खर्चा है। इफ समवन इज स्पेंडिंग 3000 ऑन अ सर्विस, तो 1500 शायद नहीं सोचेगा, तो वो खर्च देता है। बट एक्चुअली में इफ यू थिंक देयर इज नथिंग लाइक पिकअप क्लीनिंग, दे आर जस्ट लाइक, हाँ दैट्स हाँ, वो बुलशिट। add-ons. हाँ, वो जबरदस्ती का है। इफ यू हाँ, ट्राई टू क्लीन अ पिकअप, देन यू फक इट अप, because yeah, it's for clean sure. then. You Yeah, don't you don't you don't even get a hum out of it. yeah, exactly. तो there's nothing like so, इस वजह से ना लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यू, एंड that's the highest question what people ask, कि हाँ कि हो जाएगा ना, कुछ खराब तो नहीं होगा, तो ये सब। so it basically I understand कि क्या होता है। Like the musician's pain points. या सो एक बार ही हमारे पास आते, देन भी उनको समझाते हैं थोड़ा सा, वी मेक देम रिलैक्स, चिल, थोड़ा सा Delighted. गेट यूज टू द वाइब। तो उसके बाद वंस दे आर सेटिस्फाइड, देन दे डोंट गो एनीवेयर, दैट आई हैव नोटिस्ड। they become we become good friends, not I never create a such relation where it's only B2C wala thing. It's always a friend to friend or musician to F to F. musician, obviously. Yeah, it's obviously the money is also involved in the, because I'm running a business and that money comes in, and that's again invested into something good for musicians only. So obviously मेरा उसमें bread and butter and rents जरूर निकलते हैं, but in the end it's the main goal is to reach a level जहाँ पे म्यूजिशियन को प्रॉपर Like they are delighted. सब कुछ डिलाइटेड, एंड मतलब म्यूजिशियन को टेंशन लेने का जरूरत नहीं, बिकॉज टेंशन में म्यूजिक नहीं होता। यू Oh, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर प्लेइंग, एवरीथिंग इज विल बी we'll take care टेकन of केयर ऑफ। everything. हाँ हाँ, वो वाला। Interesting. So, 3 tips for artists and musicians from your own experience. Like the ones which musicians can apply immediately. Okay, Like like which they should do actually. I mean, like in what context? Like related to Playing guitar good or? music, taking care of your instruments, and of course the business side of music. Okay, so first was, what was it? Good Playing good music. music. So one thing I don't know. I mean, if I should say this or not, I'm not sure. Yes, yes, But please. The music community is, what I think is like surrounded by a lot of drugs. Musicians, as an artist, like drugs are always linked with like musicians. Which I feel is not true. An excuse. What I think personally. Yeah, it's an excuse only, but yeah, लोगों को एक ना, सबको नाम दे देते हैं कि हाँ ये सब म्यूजिशियन लोग तो सब गंजेड़ी होते हैं, शराबी होते हैं, ऐसे दिन रात दारू ऐसे पीते रहते हैं। हाँ। तो व्हाट आई थिंक इज लाइक, या इसमें क्या है, एक लोग म्यूजिशियंस के भी सबकॉन्शियस में, people also who are going to be musicians, youngsters, they somehow think कि हाँ drugs करने से I'll reach to the highest and I'll get the best quality music. It's not right, what I think. I mean, it will help you maybe for just this much time, but then there's a lot of
pain after that. हाँ, उसके बाद नहीं होगा. It's a short term pleasure. That's it. So I think to be a good musician, one should be mentally free, and there are many other several ways to do that. One is obviously I always promote meditation and yoga. So every musician, rather than doing drugs or smoking or alcohol, I recommend, I suggest, I deeply suggest, I request to try meditation and yoga once. Stay If fit. they need, stay fit, because eat on time, wake up on time. That's the only thing. Sleep, take at least 7 to 8 hours of sleep, nothing more than that. Minimum 6 घंटा भी चलेगा. So that's these three things you do, you will nail it. You won't want any drugs. अपना पैसा भी वेस्ट नहीं होगा. Exactly. वो जो जो ड्रग्स हम अंदर डालते हैं वो सब बनता है यहाँ पे, बड़े अच्छे हाँ, से exactly. बनता है. Exactly. अच्छी क्वांटिटी में बनता है, जितना हाँ, चाहिए cortisol उतना. है, इतना सारा केमिकल्स है. सब बनता है. वो एसिड एसिड एलएसडी सब बनता है दिमाग में. सब अंदर ही है. कुछ So we already सब have अंदर है. chemicals and we are importing chemicals. और हाँ, तो that's the one thing that I tell them for good music. Stop taking help of drugs. Start doing some meditation. और ये लाइक ट्रेंड बन चुका है ना, अभी भी बहुत है. मतलब नाउ इट्स Exactly. लाइक बूमिंग. इट्स लाइक अगर एक कॉन्सर्ट में जाओगे, अगर तुम्हारे हाथ में एक बियर नहीं है, यू आर नॉट अ म्यूजिक लिसनर. Yeah, लाइक व्हाट द other people will basically मॉक make एट यू. others feel like a फोमो फील कराना शुरू कर देंगे कि यार तू तो दारू नहीं पीता. मेरे साथ भी होता है कि आई डोंट टेल एनी ड्रिंकर कि तुम छोड़ दो. मेरे को आई एम नॉट बायस्ड एट ऑल, बट स्टिल आई मीन दैट्स नॉट द राइट वे. Because meditation yoga helps, it gives you the same kick. It's just that you have to practice. It's like a lick that you practice for maybe a week or a month just to Then you like become kill it. Steve Vai. You do your meditation for like the same 30-40 days, and then you see the kind of results, unexpected results. So that's like no drugs. Choose the path of spirituality and meditation and yoga. All set. बस हो गया. A good routine also helps, like food time पे, सोना time पे. थोड़ा सा effort लगता है, but it's a must. मतलब for a good healthy lifestyle, it's a must thing. What I have realized. Yeah, that's true. Like what about the like Then business? second point, I'll tell you like how to keep care of the Instruments. Yes, obviously, like care as in, yeah. So every maybe 3 to 4 months, or whenever you feel it's not working out, take it to your local tech, whom you trust. जिसका नाम चलता है मार्केट में, doesn't matter me. किसी के पास भी ले जाओ, whom you trust. दिखा के लाओ, सी कि क्या चल रहा है. क्योंकि उससे क्या है कि फ्यूचर में अगर कोई इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम आने वाली है ना, तो वो आपको पहले ही बता देगा. इट्स लाइक गोइंग टू अ डॉक्टर कि सर मेरे पेट में दर्द है, तो डॉक्टर आपको एक अल्ट्रासाउंड या फिर कोई एक्सरे लिख के दे देगा कि हाँ, कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो स्टार्ट फॉलोइंग दिस. बिकॉज इन द वर्कशॉप what we see is like 50% of the cases, I'm saying 50%, not 10-20, but 50% of the cases are like जहाँ पे musicians just ignore, and then it goes to a situation where the instrument cannot be fixed, or if it's a bigger expense. खर्चा ही इतना है, या फिर इतना खर्चा होता है कि कई बार नया गिटार ही आ जाए उसमें. Negligency. So हाँ, नेग्लिजेंसी, उसको छोड़ दिया. Then obviously, if you like to keep your guitars clean, then obviously you can buy one of Tondo's Axe Max guitar care kit. we made it with love, and बहुत मेहनत किया उसमें, 6 महीने का रिसर्च किया, and it's a fine product made in India. कहीं किसी के ऊपर रिलाई, किसी बाहर के देश के ऊपर रिलाई करने की जरूरत नहीं है. ट्राई इट, टेस्ट इट, देन यू लेट मी नो कि एक्चुअली में काम करता है कि नहीं. एंड people who have been using all the famous brands from like a decade,
जिनको 10-12 साल हो गए हैं वो ब्रांड्स यूज करते हुए, एंड दे ऑल्सो ट्राइड इट एंड दे से कि हाँ, कि दिस इज अ वे बेटर प्रोडक्ट देन वी एक्चुअली थॉट ऑफ, एंड इट्स, एंड उन्होंने सब छोड़ दिया लिटरली Wow. दीज, मतलब दीज आर द वर्ड ऑफ अ गाय अ क्लाइंट, अ गुड क्लाइंट ऑफ माइन, अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, जो टॉप नॉच क्वालिटी यूज करता था एंड उसने सब बंद कर दिया कि आई एम गोइंग टू यूज दिस ओनली एंड दिस इज द बेस्ट आई हैव सीन। तब कैसा लगता है? यस। अच्छा लगता है यार, लाइक प्राउड हाँ, फील होता एग्जैक्टली, पेज है। ऑफ, फाइनली पेड ऑफ। बिल्कुल, एग्जैक्टली, मनी डजंट पे, मतलब वो ऐसा रिव्यूज आता है ना कि कोई है, इवन दो इफ इट्स अ फीडबैक कि हाँ, जैसे हमारा इसमें पैकेजिंग में कुछ छोटा सा प्रॉब्लम हुआ था, सो पीपल सेट एंड वी रेक्टिफाइड इट लाइक विद इन 2-3 days। So all of you guys are interested in taking criticism. हाँ हाँ, ओपन टू क्रिटिसिज्म फॉर श्योर। जैसे लाइक बट वी बिल्ड अ हार्ड शेल कि नहीं, मेरे को सब सब मेरे को अच्छे बोलना है, तभी मैं नहीं अच्छा हूँ, नहीं नहीं समथिंग ऑफ दैट नहीं, सॉर्ट। if I do that, then I'm sure my growth Something is wrong with is me. something is obviously wrong with me then, and the growth also stops. There's no growth once you build a shell around you, you build a shield around you, and you are not open to criticism and suggestion. Then your growth starts, your graph starts to go down. So we are open to suggestion, but yeah, huh. But we are not open to bullshit. We are very straightforward. We have kicked out people from our workshop who Okay. who Okay. who behave rude and all that, Mm-hmm. for sure. That, yeah. So there must be harmony inside the office. Yes, because we are like, I mean, it's a very cozy place. If I welcome each and every one of you who's watching this podcast, and obviously thanks to you, Sir. Sarji, Sir जी देखना है. for just spreading my work to the Yeah, world, absolutely, man. and whoever is watching to the this podcast and is in Delhi, please do come. Just give us a call whenever you are free. You are most welcome. Exactly. So yeah. And the last tip on the business side of things, how can like musicians make money from music or some other ventures they might create? I might not be the right guy to answer this No, you're because right. The guy, you're the right guy. You're an entrepreneur. You built a brand. Come on. so actually, why I said I'm not the right guy, because I haven't spent a lot of time on what I think I have not spent a lot of time on stages, building a brand as a musician. But for sure, I can give some of my experience. I can share that. One is to basically, obviously, practice. Yeah. Practice. मन बहुत हरामी है। मन आपको मन आपको ऐसे से नचाएगा, बोलेगा यार आज प्रैक्टिस नहीं करनी, आज ये नहीं करना, बिकॉज मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और मैंने एक टाइम पे मन की सुन भी ली थी। Okay. Okay. तो टू बी अ गुड म्यूजिशियन ऑलवेज बी Be good at your प्रिपेयर्ड। craft. या होमवर्क होना चाहिए कंप्लीट इफ यू आर एट अ गिग। अगर कोई गिग बजाना है, आप यू मेक श्योर यू लर्न ऑल द लाइक म्यूजिक, you learn the melody, chords, all the parts, that पूरा सब कुछ, Riffs, हर breakdowns, riffs है, हाँ। solos, सब कुछ. सब कुछ याद करना पड़ेगा। Eat up the user And manual. exactly, and to grab opportunities from this world, there's a lot of opportunity for music. Is basically what is I was about to say ki, because we now this like social media thing, Instagram, Facebook is like free promotional platforms. Exactly. So if you want to sell out your product, if you want to sell your music, it's what I recommend कि रोज कुछ ना कुछ, रोज अगर रोज भी नहीं होता तो एटलीस्ट स्टार्ट पोस्टिंग some of your music, or whatever you are doing, if you are doing a cover, or because क्या है कि once you start posting out there, you will get a lot of motivation from the world, or maybe someone will suggest you कि oh, this should be
done like this, not like this. So You suck. exactly. People will motivate you कि हाँ. So once you start to get those kind of motivational comments and everything, people will share your post. तो वो क्या है? It gives you a drive to get the goal. So I mean, try that. Just sitting in one corner and practicing in a room where people don't even know you and expecting कि हाँ कहीं से काम आ जाएगा. It's that you have to. People Reach need out, you. network. Exactly. People need you. People need your music. You have to break your boundaries and go sell yourself. सही है. बेशरम होके Yeah, I कि get हाँ it. ठीक. Spineless. हाँ बेशरम होके कि ठीक है मेरे को इतना बजाना आता है बट मैं 100% बजाऊंगा इसको. नॉट जस्ट थिंकिंग कि मुझे कम आता है बजाना या फिर ज्यादा आता है बजाना या फिर वो मेरे से अच्छा बजाता है कि वो क्या सोचेगा. नहीं. डू योर होमवर्क नाइसली, नेल इट और स्टेज पे जाके फोड़ दो. फिर पैसा आएगा. ऐसा फिर पैसा आएगा. सही है. हाँ. Interesting. For the people who are watching this and will be watching this, I'm saying I'll leave everything this man has ever done with his brand in the description. Please do check them out. Support all of your local artists, musicians, luthiers, guitar makers, the tone door, and a lot of them. Like once again, like thank you so very much for taking the time out to do this. Thank you. Lovely Thank you. conversation Most I had with you. Same here. Same here. Thank you. Well, Means a lot. Absolutely, man. When I'll be down to Delhi, I'll visit. Okay, ठीक है. अरे most welcome. एक तकिया लगा Please. देना मेरे लिए, मैं पे सो जाऊंगा रात को. सुबह अरे निकलूंगा. we have nothing to worry. We have a full facility. बस I'm coming down. Wait now, you. ठीक है. ठीक You है. wait, I'm Most coming welcome. down. Thank you so ठीक much है. and good night. Have a great Thank week. you. Good night. Thank you. Good night. You too. Bye-bye. Bye.